नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 30 जनवरी 2023 सोमवार है। हमारे सामने ये निफ्टी का एंड ऑफ डे चार्ट है। ये कैंडलस्टिक्स बने हुए हैं और हर कैंडलस्टिक्स एक दिन का प्रतिनिधित्व करता है। ये दो लो लैग मूविंग एवरेजेस हैं। कुल मिलाकर जब ये मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मंदी का रुख है और ऊपर जा रहे हैं तो तेज़ी का रुख है। इससे सरल एनालिसिस हो नहीं सकती। इस चार्ट के बारे में, कल के रुख के बारे में बात करने के पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 दिनों में ऐसा संयोग बैठा कि मैंने आपको 4 अलग अलग ट्रेड्स दिए हैं। तो ट्रेड्स तो मैं इसमें देता नहीं हूं, मैंने आपको सलाह दी है कि ऐसा हो सकता है। सबसे पहले मैंने आपको कहा बजट के पहले बाजार में एक कोई बड़ा रुख आता है, इसलिए हम एक स्ट्रैडल खरीद सकते हैं। 18,100 का पुट खरीद लीजिए, 18,100 का कॉल खरीद लीजिए। 2 फरवरी की एक्सपायरी का, 1 फरवरी को बजट है तो 2 फरवरी तक कोई बड़ी चाल आ सकती है, न भी आए, ये बात हमेशा कही जाती है। तो 330 रुपयों का मूल्य था इस स्ट्रैडल का और मैंने आपको बताया कि मैंने भी खरीदा था। आज जब बाजार इतना नीचे गया तो एक समय जब निफ्टी 17,400 पर था तो इस स्ट्रैडल का मूल्य था 700 रुपये से ऊपर, और जब ये क्लोज किया है 650 पर तो भी इसका मूल्य था 450 रुपये से ऊपर, यानी 330 के निवेश पर यह स्ट्रैडल अच्छी कमाई कर रहा था। ये एक ट्रेड था। दूसरा ट्रेड मैंने आप लोगों को ये बताया था, समझाया था कि यहाँ पर एक ट्रेड, छोटा सा ट्रेडिंग रेंज बन रहा है जिसका 18,030 का ब्रेक डाउन पॉइंट है। अगर ये 18,030 के नीचे गया तो इसमें फिर एक एक्सपेंशन हो सकता है। ये देखिए, ये बुधवार को 18,030 के नीचे गया और काफ़ी नीचे गया, तो ये अच्छा ट्रेड बनता अगर आपने इस ब्रेकडाउन को लिया होता। तीसरा ट्रेड ये था कि 17,800 का सपोर्ट है और बहुत बड़ा ट्रेडिंग रेंज बन रहा है। 17,800 अगर टूट गया तो हमको ट्रेडेबल एक मूव मिलेगा। 17,800 शुक्रवार को टूट गया और 17,800 से आज हम 17,400, यानी कि 2 दिन में 400 अंक नीचे आए थे। वहाँ रुका नहीं पर आए तो थे। तो ये 3 ट्रेड थे। चौथा ट्रेड आज के लिए मैंने ये आप लोगों को बताया था कि 17,300 का तो टारगेट है इस ट्रेडिंग रेंज के ब्रेकडाउन का, और 17,400 ये संख्या है, ये जगह है जहाँ की गैप हुआ था। ये रनअवे ब्रेकअवे गैप था। इस ब्रेकअवे गैप का जो एक एंड है वो 17,400 है। तो 17,400 तक शायद निफ्टी आए तो वहाँ सपोर्ट बनता है। आज निफ्टी एकदम 17,400 पर आया और वहाँ से फिर उसने 250 पॉइंट की तेज़ी ऊपर मिली। ये 4 ट्रेड थे। मैं आपको ये बातें इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देखिए कितने अच्छे ट्रेड्स आपको दिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल संयोग था कि एक एक करके 4 आइडियाज़ मैंने आपके साथ में साझा की और चारों ही सही निकल गए। ऐसा भी होता है कि मैं 10 आइडियाज़ आपके साथ साझा करता हूँ और 10 के 10 गलत निकलते हैं। तो इसमें मेरी भूल नहीं है या मेरी होशियारी नहीं है। मेरा काम है एनालिसिस सही करना और उसको आपके सामने रखना। उसके बाद मार्केट का काम है कौन सी एनालिसिस को वो रिवॉर्ड करता है, उसको पुरस्कृत करता है, कौन सी को वो छोड़ देता है। तो मेरी एनालिसिस में कमाई हो रही है या नुकसान हो रहा है वो मेरे कारण नहीं हो रहा है, वो मार्केट की इच्छा से हो रहा है। ये कहने का मतलब है, लोग है ना बहुत बार झुंझला जाते हैं कि आपने ये कहा और ऐसा हुआ नहीं। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात होती कि मैं कहता हूँ तो सारे काम हो जाते। क्या ऐसा हो सकता है? ये तो आप भी समझते हैं। इसलिए कोई भी ट्रेड अगर सही गया है तो मेरे कारण नहीं गया है, वो मार्केट की इच्छा थी उसको पुरस्कृत करने की, इसलिए गया है। हमारा काम होता है सही एनालिसिस करना, बस। अब कल की बात है। देखिए, ऐसा लगता है कि 17,400 पर एक जो टारगेट था, सपोर्ट था, वो सब हो गया। आज पूरा 2 दिन में हुआ। 1.5 महीना का ट्रेडिंग रेंज 2 दिन में अपना रास्ता पूरा करके चला गया। ऐसा ही होता है नीचे की तरफ खास करके। अब हम ये सोचते हैं कि यहाँ से कोई बाउंस बैक आना चाहिए। सबसे पहला रेजिस्टेंस 17,800 पर है, जो कि सपोर्ट था जब टूटा था तब, और उसके बाद जो करे बाजार कर ले। पर मेरी समझ में अब मंदी का रुख कुछ समय के लिए तो नहीं रखना चाहिए। ये बात हो गई। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते होंगे। आपके कमेंट्स मुझे बहुत उत्साहित करते हैं, सो अवश्य दीजिएगा। जय हिंद। गुड इवनिंग।
I am Sudarshan Sukhani and today is January 30, 2023, Monday. Before we talk, this is the Nifty chart, end of day Nifty chart, and these are two low lag moving averages. When the moving averages are rising, the trend is up. When they are falling, the trend is down. Analysis cannot be simpler than this. As far as possible, we should try to keep our analysis as simple as possible, because we are analyzing a very complex entity, the market. If our analysis is also complex, the complexity is squared many times, and the end result is almost impossible to predict, to understand. So analysis should be as simple and as easy as we can do it. Before I go and explain to you what I think about the Nifty, let me share with you some status of the YouTube videos that I have been making for the last 10-12 days. I have given you 4 trading ideas. They are not trading calls, far from it. I do not like to give calls at all, and I don't have the ability also. But they are suggestions with charts and explanations. The first of them was that I said that before the budget on February 1 or after the budget, sometimes markets make big moves. So there is a possible trade that we buy the call and the put of 18,100, buy 18,100, because that is the price at which it was the Nifty was trading when we discussed it, and then stay quiet and wait for an expansion in any one direction. I also took that trade and I shared that with you and said I think it was at a cost of 330 rupees for the straddle together. If that trade was held for today, and the budget has not come yet, so it should have been. When the Nifty was 17,400, that trade was worth 700 plus points. Investment 330, valued 700 plus. Even at the closing today, the trade was worth 450 plus points. Investment 330. So it was a good trade. Then I had explained that a very narrow 5-day trading range is under development with a breakdown point at 18,030. So if that breaks on the downside, a trade on the downside is possible. On Wednesday, 18,030 broke during intraday trading and went very deep down. That was a successful trade. The third was that a large trading range was under development. We have been talking about it for many days now. If 17,800 this level breaks, then we can expect a strong expansion on the downside. The level broke on Friday, and from 17,800 we saw 400 point expansion, except that the trading range took weeks to develop and the expansion took 2 days to complete on the downside. That would have been a profitable trade. The fourth suggestion, none of them are trades. The fourth suggestion was made for today when I explained to you that the target for this trading range is 17,300, and that is a support zone. This on the left side, you can see my mouse pointer. This was a breakaway gap. So the low of the top of the breakaway gap acts as support, and this is 17,400. I had identified a zone of 17,300 to 17,400 as a possible support, and explained that if we come to this support, and we may not, but if we do, then we will look for a buying opportunity. As luck would have it, today itself the market fell and came to 17,400, and from there it bounced 250 points on the upside. So that was the point at which we had anticipated buying, and then the long, if any purchase was made, intraday 250 point gains would have been available. Now I also know that all of this we cannot actually time it to the points. I'm just saying that there were 4 trades in the last few days and 4 suggestions in the last few days. Now my point is something else. I'm not trying to praise myself, far from it. If I have given you 4 such suggestions and all 4 of them have worked out, there are going to be, and there have been times when I have given you 10 suggestions and each one of them was a failure. So it is not my ability or disability, and I am not a future forecaster. I do not know what the future holds, far from it. How can I? You also understand no one knows the future. I am only trying to say that our task is to analyze the markets to the best of our knowledge. We have a setup, we have a process, we should complete that process and do it properly. After that, the reward is for the market to give. So many times people complain to me, see, you said this, you gave this trade, you gave this idea and it did not work. That's a pity. But if it works or does not work is not my
responsibility. Actually, it's not even my task. It is for the market to reward us. Our task is simply to see that we have taken the suggestions, or we have given the suggestions and the trades in the process, following the process for which we are doing this trading for years. If the process is okay, the reward is for the market to give. That was my point, that this is not my credit if 4 trades have gone well, and it is not my discredit if the trades do not go well. My credit is if the process is done properly by me. That is what I want to do. I hope you've understood what I'm trying to say. Finally, it's been a long video. I think we have reached a support level, bounced back, and the chances are that now for the next few days at least, or maybe a couple of weeks, the trade should be mainly on the long side of the market. Look to buy. Thank you for watching this video. Jai Hind.